अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सचिवैः समं कृतवान् उच्चस्तरीयम् उपवेशनम्। आधारभूत संरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश प्रकरणेन सम्बद्धेषु महत्वपूर्णेषु तत्र समाचरितं गता चर्चा। प्रधानमन्त्री तावत् दत्तसंग्रहणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषये, अनुसन्धान नवाचारेषु कार्याचरणाय अपि प्रदत्तवान् सविशेषं बलम्। गृहमन्त्री अमित शाहः सिलीगुड़ी इत्यत्र सीमा सुरक्षा विषये कुर्यात् उच्चस्तरीयम् उपवेशनम्। अनेकासाम् आधारभूत संरचना विकासगतानां परियोजनानां कुर्यात् असौ उद्घाटनम् अथ शिलान्यासम्। पुणे नगरे ब्रिक्स संचारमन्त्रिणां मन्त्रणा। अत्र उदीयमाने प्रविध्याधारभूत संरचना सुरक्षादिसमेतेषु महत्वपूर्णेषु विषयेषु समाचर्येत विचारः। न्यायालयस्य आदेशस्य अनन्तरं गतरात्रौ सुरक्षामध्ये इमरान खानः चिकित्सालयं प्रवेशितं जातः। सम्बद्धं क्षेत्रं तावत् सर्वतः सैन्यसङ्कुलमयं दृश्यमानम्। नाइजीरिया देशे बृहती दुर्घटना, नौकानिमज्जनेन प्रायः 51 जनानां मृत्युः। तत्र मृतकेषु बालानां, महिलानां च अस्ति महती संख्या। क्रीडावार्तायां वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इत्येतस्यां प्रतियोगितायाम् अद्य सात्विक चिराग युगलं क्रीडेत् प्रागुपान्त्यचक्रीयां स्पर्धां। महिला युगलवर्गीयायां प्रागुपान्त्यचक्रीयायां स्पर्धायां त्रिसा जॉली, गायत्री गोपीचंद इत्येतयोः सामुख्यं स्यात् चीनदेशीयस्य चतुःक्रमिकस्य युगलस्य विरुद्धम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वीये आवासे भारत प्रशासनस्य सचिवैः सह तृतीयम् उच्चस्तरीयम् उपवेशनं गतदिने अनुष्ठितवान्। उपवेशने एतस्मिन् आधारभूत संरचना, संपर्क, सुरक्षा, वैदेशिक प्रकरणादिषु विषयेषु सम्बद्धानां मन्त्रालयानां तत्तद्विभागानां च भविष्यत्कालिकीं कार्यसूचीमाश्रित्य विस्तृता चर्चा जाता। प्रधानमन्त्री इह उक्तवान् यत् सर्वैः सचिवैः तात्कालिक प्रकरणेषु सम्बद्धेषु समाकलनेषु एव च आश्रितैः न भाव्यम्, अपितु दीर्घकालिक दृष्टिकोण पुरस्सरं देशस्य भविष्यम् उन्नेतुं विशिष्य चिन्तनीयम् इति। गतसायं पश्चिमबंगालं सम्प्राप्तः केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य तत्र सिलीगुड़ीति स्थले विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु सहभागितां कुर्यात्। अमित शाहः तत्र सशस्त्र सीमबलस्य विभिन्नानां परियोजनानां लोकार्पणम् अथ शिलान्यासं समाचर्य सैनिकैः समं संवादं कुर्यात्। ततः परम् असौ विधित्रयम् आलक्ष्य आयोज्यमानायाः प्रदर्शन्याः उद्घाटनसमारोहे अपि सम्मिलितः भवेत्। वन्दे मातरम् इति राष्ट्रगीतमाश्रित्य कांग्रेस दलस्य कार्यसमित्याः निर्णयः अधुना विवादस्य विषयः जातः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः कांग्रेस दलीय निर्णयस्य एतस्य भर्त्सनां विधाय एतं राष्ट्रविरोधि निर्णयत्वेन निरूपितवान्। तेन आरोपितं यत् कांग्रेस दलेन मुस्लिम तुष्टीकरणस्य कुराजनीतिं कुर्वता वन्दे मातरम् इति गीतस्य द्वयोः भागयोः विभाजनं कृतम्, येन देशविभाजनस्य आधारः अपि दृढतरः जातः। तेन उक्तं यत् एवंविध निर्णयेन कांग्रेस दलं देशस्य लक्षशः हुतात्मनां त्यागस्य अपमानं कुर्वद् अस्ति इति। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ।
मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह चेन्नई नगरस्य कोवलम इत्याख्ये क्षेत्रे दक्षिणवर्तिन्याः क्षेत्रीय परिषदः 31तमस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। उपवेशने दक्षिणवर्ति राज्यानां मुख्यमन्त्रिणः, उपमुख्यमन्त्रिणः, मन्त्रिणः अथ वरिष्ठाधिकारिणः अन्ताराज्यीय परेषु विवाद सुरक्षा विकास सम्बद्धेषु प्रकरणेषु चर्चाः कृतवन्तः। उपवेशने तावत् तमिलनाडु राज्यस्य मुख्यमन्त्री सी जोसेफ विजय इत्यसौ, कर्णाटक राज्यस्य उपमुख्यमन्त्री डी.के. शिवकुमार इत्यसौ, केरलम राज्यस्य मुख्यमन्त्री वी.डी. सतीशन् इत्यसौ, तेलंगाना राज्यस्य उपमुख्यमन्त्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क इत्यसौ, आन्ध्रप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री एन चन्द्रबाबू नायडू इत्यसौ अथ नैके वरिष्ठाः नेतारः समुपस्थिताः अभवन्। इतोपि पुदुचेरी राज्यस्य उपराज्यपालः, अंडमान निकोबार द्वीपसमूहस्य उपराज्यपालः, लक्षद्वीपस्य प्रशासकः, विभिन्नानां मन्त्रालयानां वरिष्ठाधिकारिणः च उपवेशने सम्मिलिताः अभवन्। अवधातव्यमस्ति यत् सञ्जाते तस्मिन् उपवेशने दक्षिणवर्तिराज्यानां विविधेषु प्रसङ्गेषु विमर्शः जातः। भारत जापान देशयोः मध्ये रक्षाक्षेत्रे सामुद्रिक सुरक्षाक्षेत्रे च सहयोगः नूतनां दृढतां प्राप्तवान्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः जापान देशस्य रक्षामन्त्री शिंजिरो कोइजुमी इत्यसौ च नवदिल्ल्यां द्विपक्षस्तरीयं संवादं विहितवन्तौ। रक्षामन्त्री इह उक्तवान् यत् भारत जापानगत सम्बन्धः सहभागि लोकतान्त्रिक मूल्यसमाश्रितः पारस्परिक सम्मानाधृतः च अस्ति। तावत् उभाभ्यां नेतृभ्यां सामुद्रिक सुरक्षा सहयोग सम्बद्धे सहमतिपत्रे हस्ताक्षरमपि विहितम्। नौसैनिकाभ्यासे, सूचना विनिमये, जलपोत निर्माणे, रक्षा प्रविधि क्षेत्रे अथ हिंद प्रशांत क्षेत्रे सहयोग विस्तारमुद्दिश्य अपि उभौ देशौ सहमतिं प्रकटितवन्तौ। कुमामोतो क्षेत्र में आए विनाशकारी भूकंप के बाद हुए नुकसान के प्रति भारत सरकार और भारत की जनता की तरफ से गहरी संवेदना और जापान के साथ एकजुटता की अभिव्यक्ति करता हूं। एक्सेलेंसी, हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है। एक्सेलेंसी, एशिया के 2 बड़े लोकतांत्रिक देशों के रूप में पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को सुनिश्चित करने की इंडिया और जापान की एक अहम जिम्मेदारी है। चतुर्थे भारत सिंगापुर मन्त्रिस्तरीये विशिष्टे सम्मेलने सहभागितां कर्तुं सिंगापुरदेशं गता वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः तत्र स्थानस्थले प्रधानमन्त्रिणं लॉरेंस वोंग इत्येतं मिलितवती। एतस्मिन् मेलनावधौ भारत सिंगापुर मध्ये व्यापक रणनीतिक सहभागितापरस्य प्रारूपस्य क्रियान्वयनम् अभिलक्ष्य समाचरितायाः प्रगतेः समीक्षा कृतं गता। अत्रान्तरे विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः, वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः अथ सञ्चारप्रविधिमन्त्री जितिन प्रसादः अपि उपस्थिताः आसन्। नवदिल्ल्यां केन्द्रीयावास नागर कार्यमन्त्री मनोहर लालः दिल्ली मास्टर प्लान 2047 इत्येतस्य घोषणां कृतवान्। अत्र प्रारूपे 47-2सहस्रतमवर्षं यावत् दिल्ली विकसिता, सुनियोजिता अथ वैश्विकस्तरीया राजधानी स्यात्, एतदर्थं दीर्घकालिकरूपरेखा निर्मितं गता अस्ति। अत्रावसरे दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता अथ उपराज्यपालः तरनजीत सिंह संधुः उपस्थितौ आस्ताम्। केन्द्रप्रशासनेन बिहारराज्याय बृहत्तमः उपहारः प्रदास्यते इति घोषितमस्ति। एतदनु राज्यस्य 11 लक्षतः अपि अधिकेभ्यः निर्धनपरिवारेभ्यः आवासानां सुविधा प्रदास्यते। पटनानगरस्य बापू इत्याख्ये सभागारे आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणः आवासावण्टनपरं स्वीकृतिपत्रं मुख्यमन्त्रिणे सम्राट चौधरी इत्येतस्मै प्रदत्तं गतम्।
कार्यक्रमे उपस्थितः केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः उक्तवान् यत् बिहार राज्यस्य काचिदपि भगिनी आवासवञ्चिता नैव भविष्यति। समेषां कृते अस्माभिः आवासप्रदानव्यवस्था करिष्यते। पुणे नगरे डिजिटल ब्रिक्स फोरम एक्सपो इत्यत्र भारतस्य सञ्चारयात्रायाः प्रविधिविकासकथायाः च समुपन्यासः सांस्कृतिकरिक्थतत्त्वैः सह संयोज्य जातः। केन्द्रीय सञ्चारमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धिया इत्यसौ विभिन्नदेशेभ्यः आगतानां प्रतिनिधिमण्डलानां स्वागतं विधाय उक्तवान् यत् विकासस्य प्रगतेः च वास्तविकाधारः मानवसम्बन्धाश्रितः अस्ति। सञ्चारस्य उद्देश्यं च जनेषु समीप्यवर्धनम् अस्ति इति। तेन प्राचीनकालतः अत्याधुनिकप्रविधिमयकालं यावत् सञ्चारस्य विकासयात्रा अपि विशदिता। तत्रैव पुणेनगरे 12 ब्रिक्स सञ्चारमन्त्रिणां मन्त्रणा अद्य स्यात्। तत्र उदीयमाने प्रविध्याधारभूत संरचना सुरक्षादिसमेतेषु महत्वपूर्णेषु विषयेषु चर्चा समाचर्येत। यथायुगं सञ्चारप्रविधिक्षेत्रे विकासादि समानयनं हि एतस्य मन्त्रणाविशेषस्य लक्ष्यमिति अवधातव्यम्। बांग्लादेशे नेशनलिस्ट पार्टी इत्येतस्य दलस्य प्रत्याशी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर इत्येषः नूतन राष्ट्रपतित्वेन चितङ्गतः। देशे एतस्मै पदाय 35 वर्षाणाम् अनन्तरं प्रथमं तावत् जातायां निर्वाचनस्पर्धायां 78-वर्षीयः आलमगीर इत्येषः 55,200 मतानि सम्प्राप्य जयं प्राप्तवान्। तत्र राष्ट्रपतिपदाय नवनिर्वाचितः मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर इत्येषः अद्य सायं बंगभवनं बांग्लादेशस्य नवराष्ट्रपतित्वेन शपथवचनं स्वीकुर्यात्। न्यायालयस्य आदेशस्य अनन्तरं गतरात्रौ सुरक्षामध्ये इमरान खानः चिकित्सालयं प्रवेशितः जातः। सम्बद्धं क्षेत्रं तावत् सर्वतः सैन्यसङ्कुलमयं दृश्यमानम् अस्ति। तत्रैव नाइजीरिया देशे बृहती दुर्घटना तत्र समाचरितं गता। नौकानिमज्जनेन प्रायः 51 जनानां मृत्युः अभवत्। एतस्यां दुर्घटनायां तत्रैव मृतकेषु बालानां महिलानां च महती संख्या अस्ति। क्रीडावार्तायां वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इत्येतस्यां प्रतियोगितायाम् अद्य सात्विकचिरागयुगलं तत्र प्रागुपान्त्यचक्रीयां स्पर्धां क्रीडेत्। महिला युगलवर्गीयायां प्रागुपान्त्यचक्रीयायां स्पर्धायां तावत् त्रिसा जॉली गायत्री गोपीचंद इत्येतयोः सामुख्यं स्यात् चीनदेशीयस्य चतुःक्रमिकस्य युगलस्य विरुद्धम्। एतेन सहैव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्। கிடதாக